Assalamu alaikum, dear students. Today is our lecture number 6, and it is about what is register. A register in linguistics definitely is very important. It is very important to know about register, and by knowing register, we can use our language in a very proper manner. Now, let's talk about what is register. In the previous classes, I taught you about collocation, connotation, and I taught you about few other things. And I hope you must have watched the video properly, and you must have understood many things. If you have any problem regarding those things, you can also ask me uh, your questions, and I hope that you will ask me questions, and in this way, you will be able to get plenty of knowledge. Now, what is register? So, in linguistics, register refers to the variety of a language that is used in a particular social setting or for a particular reason. It refers or it is about the variety of a language that is used in a particular social setting or for a particular reason. Register often refers to the degree of formality of language or informality of any language. But in a more general sense, it means the language used by a group of people who share same work or interest, such as doctors or lawyers. Means when they sit together, they talk to each other, especially about their profession. So they use register. They have specific words which they use. So they take special care of formality or informal language or other even slang language that is called very informal language. So this is what we call register. For example, you can see here for formal and informal register, there's a sentence, would you mind passing the salt? Now, this is appropriate for a formal situation with strangers. If you use this sentence, would you mind passing the salt? It is appropriate for a formal situation with strangers. Whereas, pass with the salt would be used for a situation where friends are talking. Means if you use, would you mind passing the salt when you're talking to your friends, so it will look very awkward. It will look very odd or very strange. Why? Because we cannot use or we cannot become formal with our friends. If you are becoming formal with your friends, it means there is a distance, or you are either playing a joke with him or her, or you are becoming you. There is a kind of distance between you both. So pass me the salt. This is an appropriate sentence when you're talking to your friends, or possibly, or if you want to become, if you talk, use the same sentence to any stranger, so it means you're becoming rude with that strangers. So you can see the sentence, it differs from person to person who we are talking to, and of course that personality plays a very important role. So where we have to become formal, where we have to become informal, this is what we understand through register. In the classroom, although register is a complex area, it is a complex area, the most common aspect we look at in language learning is the degree of formality. Degree of formality is very important. Teachers often divide functional language into three working categories. What are those three categories? That they divide functional language into formal, neutral, and informal. There are some words, some language, some sentences, some phrases which are formal, and there are some words, phrases which are neutral, and some are informal. Now, formal words. You can see over here, I have provided you some words which are formal. And of course, there are informal words as well. Not only formal, but there are informal words. So we can say informal and informal words. For example, book. If you want to say that मेरे लिए दो सीटें बुक करवा दो, तो आप यूज करेंगे बी डबल ओ के बुक एज अ वर्ब. So this is informal word for in this sense कि kindly get two seats books for me, यानी मेरे लिए दो सीटें बुक करवा दो. अगर आप इसको फॉर्मल अंदाज में कहेंगे तो आप ये कहेंगे kindly reserve me
or get 2 seat reserved for me, or reserve 2 seats for me, मेरे लिए 2 सीटें रिजर्व करवा दें. Reserve is a formal word and informal word is book. Similarly, check. Check is a formal word which means जैसे हम normally कहते हैं check कर दो, इसको check कर दो, उसको check कर दो, इस document को check कर दो. तो check जो है informal word है, जबकि इसका formal word कौन सा है, वो verify है. Verify this document, verify this you know piece of writing, जो भी हो उसको आप verify कर क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इट मीन्स यू आर यूजिंग formal word. And in documentation it is very common to it is very commonly used. Formal words are very commonly used in documents. Get is again an informal word we normally use in everyday life. And if you want to become formal here, so we use receive. For example, I have got my degree this year, and if you want to use formal word, then you can say I have received my degree this year. So receive is formal and get is informal. Help is a word that is informal, and what we have formal in place of help, that is called assistance. So with the assistance of that person, I've got this thing properly done, or with the help of that person I've got this thing properly done. So help is informal word, whereas assistance is a formal word. Then you can see there is a phrase, say sorry. Now, say sorry is an informal phrase, and if you want to use formal word, then you can find here apologize. Apologize is a formal word which we use in normally in formal spoken or written language. Begin. Begin is again informal word, and what is the formal word of begin? Commence. Commence is a formal word for begin. So normally you will find people use begin or start. So these are informal words, and you can also say they are not neutral words. But commence is a formal word. You will find the use of commence or commence in notification, notices, in documentations, and in technical writing. You will find the word of commence. Eat. Eat is an informal word, and what is the formal word of eat? Consume. Consume. Now consume is a formal word, and you'll find rarely it's used, but when you find its use, it must be the formal writing. Either you can find its use in medical terminology, or you can find its use when you talk about nutrition and something like this. Informal word throughout means phrasal verbs are normally informally used, and we have one word, informal words. So throughout is uh, it is a phrasal verb and it is informal. And what is the formal word of throughout? It is eject. So you can see there are some formal and informal words. Further, you can find over here formal and informal words. Reserve, as I've already mentioned, verify, receive, get, assistance. So these things have been repeated. Formal and informal words. If you see further, so here you can see neutral as well. For example, glasses is a neutral word. It is neither formal or nor informal. So it is a neutral word. Whereas spectacles is a formal word. Spectacle is a formal word, and specs is an informal word. Specs is an informal word. New child. Child is a neutral word, means it is formal, and informal means neutral, neither formal nor informal. Whereas offspring is a formal word. You can find it is used. Offspring is used normally in literature, and of a very high class writing. You can find the use offspring is used in place of child. Informal is kid. In everyday life we use kid. How are your kids, or what are your kids doing nowadays, like this. Clothes is neutral, and what is informal of clothes? Clobber, kit. And what is formal of clothes? Clothing, garments and clothing, these both are formal words for clothes. Similarly, you can find here husband and wife. These both are formal words. And what is the informal word? Other wife, other half. Where is your other half? If you're talking to husband or wife, so you can use other half. Other half is either husband or wife. Converts is a word that is formal, which means talk, and informal word is talk.
I'm conversing, or he's conversing with his brother, or he's talking to his brother. So talk is used in very informal. It is used in informal talk or conversation, or informal spoken or written language, whereas converse is used in formal writing or spoken English. Remember, in everyday life, we normally use 90%, according to research, 90% we use informal language, and hardly 10% we use formal language. Why? Because we use formal language when we talk to our elders, when we talk to our teachers, when we talk to those people who are who have who have high post, who are having better post jobs than us. So we very rarely talk to them, or we talk to them when it is very necessary. So we use formal words, we use formal language, we become very careful according to their status. We then talk to them, and we talk to them with, when we when it is very necessary. We try to finish conversation as soon as possible. So it is said that rarely 10% we use formal language, but 90% or more than 90% we use informal language. Now there is a word demise. Now it is a word that is used in place of death. Death is used in as an informal way, and its formal is demise. And demise is a better word than death. Begin and start, as I've already told you, that begin and start they both are neutral, and commence is formal, and begin and start they are both are informal as well. So begin and start they are not only informal, but they are also neutral. गेट ऑफ, अगर आप किसी चीज़ से मिसाल के तौर पर आप किसी सवारी से नीचे उतरना चाहते हैं, घोड़े से या जो कोई ऐसी सवारी से नीचे उतरना चाहते हैं, तो आप अलाइट करेंगे. अलाइट जो है फॉर्मल वर्ड है, जबकि फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ जो है वो न्यूट्रल भी है और इनफॉर्मल भी है. तो इससे क्या पता चला कि फ्रेजल वर्ब नॉर्मली क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, जबकि वन वर्ड जो होते हैं नॉर्मली दे आर फॉर्मल वर्ड्स. Now some phrases and sentences. Here you can find some phrases and sentences. For example, pardon, sorry, or what. These are neutral. Pardon, sorry, and what. These are also informal. But what is their formal? I beg your pardon. Miss, अगर आप किसी को सॉरी कहना चाहते हैं, या किसी की बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप उसको उसकी तवज्जो दिलवाना चाहते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं पार्डन, सॉरी, और व्हाट. दिस इज न्यूट्रल और इनफॉर्मल. लेकिन अगर आप फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होंगे तो आपने क्या कहना होगा, आई बेग योर पार्डन. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टीचर से अगर कहना चाह रहे हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे, आई बेग योर पार्डन सर. और आप किसी ऑफिस की मीटिंग में यू वांट टू से आस्क योर बॉस टू रिपीट your things for you, then you can say I beg your pardon if you are formal with your boss. अगर आप फॉर्मल अपने बॉस के साथ, तो बॉस बजाते खुद ये वर्ड जो है ये भी इनफॉर्मल वर्ड है, एंड इट्स फॉर्मल जो होगा वो जो है ऑफिस प्रिंसिपल या जो भी इसके होंगे वो इसका फॉर्मल है, लेकिन ये बॉस खुद भी जो है इनफॉर्मल वर्ड है. मेंड इज अ न्यूट्रल वर्ड, और इसका आपके पास फॉर्मल रिपेयर है, और मेंड इज ऑल्सो इनफॉर्मल. ऑल राइट, जिसे हम कहते हैं ना ओके. ऑल राइट is informal and neutral both, but okay is informal. Acceptable, satisfactory, ये formal word. All right की जगह अगर आप कहेंगे, अगर आप formal word का इस्तेमाल करेंगे, then you have to use it is acceptable or it is satisfactory. Thank you, it is neutral and it is informal. And thanks is also informal. But if you want to become formal, then you will say I am grateful to you, or I am very grateful to you. So this is what is formal. Remember, formal language we use in applications, in letters. Formal words and sentences we use when we are writing answers in the exams. Unfortunately, I've seen many students, मैंने बहुत से students कॉपीज में देखा कि वो informal words का इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात तो वो वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि SMS में इस्तेमाल की जाती है. इस तरह की चीज़ों को करने से होता ये है कि दे लूज देयर मार्क्स. व्हाई? बिकॉज दे शो देयर नेग्लिजेंस, दे शो देयर हीडलेसनेस. वो अपनी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और सीरियसनेस नहीं शो करते, जिसकी वजह से दे यूज इनफॉर्मल और समटाइम इवन स्लैंग लैंग्वेज.
एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट गेट गुड मार्क्स। तो वहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, और एकेडमिक राइटिंग होती है, एकेडमिक राइटिंग में फॉर्मल लैंग्वेज ही इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद हमारे पास वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड स्लैंग। अब तक हमने जो बात की फॉर्मल, इनफॉर्मल और न्यूट्रल, नाउ स्लैंग। व्हाट इज स्लैंग? इट इज वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज, एंड रिमेंबर it's some language centers I've heard that students say that we have learned this language from, we learned slang language from this and that language center, और teachers कुछ slang सिखा रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि slang language जो होती है वो लैंग्वेज ऐसी होती है जो समझ लें very informal language होती है, and we should being an educated person we should avoid slang language। slang language से हमें बचना चाहिए, it is not good for educated people। So slang is a very informal kind of vocabulary, and it is used mostly in speech by people who know each other well, जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मतलब अबे यार क्या हो रहा है, अबे कहाँ जा रहा है, तो ये अबे हो गया, या तेरे पास क्या है, इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो जो है स्लैंग कहलाती है, और इस तरह की लैंग्वेज से हमें बचना चाहिए। हाँ, जब आपस में दोस्त यार बैठे होते हैं तो वो उसमें देख सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से, अदरवाइज वी शुड ट्राई टू अवॉइड। अब ज़ाहिर है मैं किसी स्टूडेंट्स को या कोई टीचर किसी स्टूडेंट से अगर ये कहे तेरे पास क्या है या तूने क्या किया, तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा। टीचर स्टूडेंट से इसी तरह से बात करेंगे कि आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, तुम भी कहते हुए बहुत अजीब सा महसूस होता है। तो आप सिमरात वी शुड बी फॉर्मल, वी शुड यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज विद आवर स्टूडेंट्स एज वेल, और कहीं अगर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा तो थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाए, लेकिन वी शुड अवॉइड स्लैंग, नो वन शुड यूज स्लैंग वर्ड्स और लैंग्वेज। सो माई shoelace has burst, burst here means broken। how are the kids, children? Let's chill out, chill out means relax, slang का इस्तेमाल किया जा रहा है। he is a real prat, prat here means fool, and can you lend me some cash? So here cash means money, instead of using cash if you use money, so it will be better। वो स्लैंग जो है इसका इस्तेमाल वेरी इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में होता है, एंड इट इज़ यूज बिटवीन पीपल और अमंग पीपल हु नो ईच अदर और हु नो वन अनदर वेरी वेल। तो स्लैंग के बाद फिर हमारे पास वर्ड्स आते हैं जैसे टेबू वर्ड्स, जिसको वी शुड अवॉइड यूजिंग टेबू वर्ड्स एंड वी शुड नॉट यूज देम एट ऑल। इसका तो हमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दीज वर्ड्स डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम place to place, region to region। Maybe there are words which are taboo for us, but these words are not taboo for Western culture। हो सकता है मगरिब में जो है ये वर्ड्स टेबू ना समझे जाते हैं, और हमारे यहाँ मशरिक में ये वर्ड्स टेबू समझे जाते हैं। देयर आर मेनी वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल in our culture, in our context, if a girl says, I have a boyfriend, so I have talked to my boyfriend, so this is a taboo in our, this is taboo in our context, means boyfriend और girlfriend का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये taboo है, highly, it's a very high degree taboo word or phrase। We should avoid such things in our culture, but this is very common and normal in वेस्टर्न कल्चर। वहाँ पे गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड जो है ये नॉर्मल सी चीज़ है, वो इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है, इट इज़ नॉट टेबू। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई लड़की कहती है कि मैं अपने दोस्त से बात करी, तो वो कहेगी आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, इट इज़ अंडरस्टूड दैट शी हैज़ अ फ्रेंड हु इज़ गर्ल। जैसा कोई लड़का कहेगा तो कहेगा आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, इट इज़ अंडरस्टूड दैट ही इज़ टॉकिंग टू अ बॉय। हाँ, आप अपने आपके साथ जो पढ़ते हैं आप उसको कोलीग कह सकते हैं, उसको आप क्लास फेलो कह सकते हैं, या जो आपके साथ काम कर रहा है उसको आप कोलीग कह सकते हैं, ठीक है, जो आपके साथ रहता है उसको आप नेबर्स कह सकते हैं। शी इज़ माई नेबर, शी इज़ माई कोलीग, शी इज़ माई क्लास फेलो, शी इज़ माई क्लासमेट। बट इफ यू से शी इज़ माई फ्रेंड और गर्ल फ्रेंड स्पेशली, देन इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ टेबू। इसी तरह से बहुत सारे जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिर से लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें भी बहुत से वर्ड्स टेबू समझे जाते हैं। इफ़ यू यूज़ उर्दू फॉर एग्जांपल, कुछ टेस्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर पेशाब का टेस्ट, ये उर्दू में हम कहेंगे तो उसमें टेबू समझा जाता है। टेबू से मुराद बेहुदा अंदाज समझा जाता है कि यार इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, कैसे बात कर रहा है। अगर आप कहेंगे यार मुझे पेशाब का टेस्ट करवाना है, यही चीज़ अगर आप अंग्रेजी में आप कहेंगे यूरिन टेस्ट, सो नोबडी विल consider it bad, nobody will consider it taboo, it's very normal। मतलब यूरिन टेस्ट, यूरिन का मतलब उर्दू में क्या बनता है सबको पता है,
तो यूरिन टेस्ट अगर आप उर्दू इंग्लिश में कहेंगे, इट इज़ कंसिडर वेरी नॉर्मल, एंड इट इज़ consider it is a good way of using or talking about this test. But if you use उर्दू, तो उर्दू में आप फंस जाएंगे, क्योंकि उर्दू में हमने उसको इतना नेगेटिव लिया कि वो हमारे लिए टेबू बन चुका है। इसी तरह से कुछ जानवरों के नाम है, जैसे डॉग है। डॉग को अगर आप उर्दू में कहीं कहेंगे, तो वो उर्दू में टेबू बन चुका है, यानी कि उर्दू में अब वो हमारे हम इस्तेमाल करते हैं तो एक गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसीलिए वो टेबू बन चुका है। बट इफ़ यू से द सेम इन इंग्लिश, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। So actually it differs from culture to culture, region to region. Many languages have words which are considered dangerous, holy, magic or shocking, and which are only used in certain situations or by certain people. So taboo words are shocking, बहुत shocking होते हैं, ठीक है। They are common in situations where people want to express powerful emotions by using strong language. तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें बात करनी होती है, और हमें उनके लिए बहुत ही एहतियात से अल्फाजों का इस्तेमाल करना होता है। एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू avoid taboo words, words which are shocking, words which are not appropriate, we have to avoid them. कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर टेबू की और आपको दी गई है। फॉर एग्जांपल शिट एक वर्ड है विच इज़ वेरी कॉमनली यूज इन आवर कॉन्टेक्स्ट। हमें नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो शिट इज़ अ टेबू वर्ड। हम जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शिट आई हैव लॉस्ट माई कीज। तो शिट इज़ अ टेबू वर्ड एंड वी शुड अवॉइड यूजिंग शिट। शिट कहते हैं गंदगी को, फलाजत को। सो वी शुड अवॉइड यूजिंग शिट। इस तरह से एक वर्ड है पिस, इट मीन्स टू यूरिनेट। तो इसका इस्तेमाल भी जो है वो टेबू कहलाता है। आई मोर पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस इज टू इज गो टू द टॉयलेट। अगर आप इसी चीज़ को पोलाइट वे में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, गो टू द टॉयलेट और लू, और गो टू द बाथरूम, और सिंपली गो। Oh damn, I forgot he was coming. Oh damn, it is also taboo. A swear word that people use to show that they are annoyed, disappointed, etc. So what the hell do you think you are doing? So what the hell is also considered taboo? Where the fuck are the car keys? तो ये जो शुरू में जो हाईलाइटेड जो फ्रेज है, ये भी क्या है, टेबू है। टेबू से मुराद वी शुड अवॉइड यूजिंग सच फ्रेजेस, words and sentences. Why? Because they are not appropriate in our context, and they are not appropriate in our culture. They are considered very bad and immoral. Where is the bloody switch? कोई गुस्से में आ गया, कहाँ गया यार, गाली दे दे के बोलता है स्विच कहाँ गया, तो वो ब्लडी एक किस्म की गाली है। इट्स ब्लडी रनिंग अगेन। यहाँ पे गुस्से में कहा गया बारिश भारा हो रही है यार, ये वो, तो ब्लडी का इस्तेमाल कर दिया, तो ये टेबू हो गया। सो वी शुड ट्राई टू, वी शुड नॉट ट्राई, वी मस्ट ट्राई, और वी मस्ट अवॉइड यूजिंग टेबू वर्ड्स। ये भी हमें रजिस्टर से पता चलेगा। अच्छा, फिर रजिस्टर का इस्तेमाल में हमें यही पता चलता है कि स्पीच एंड राइटिंग, some words are more associated with either spoken or written language. So in such cases, it is very important to know if a word has a particular strong association with speech or writing. ये जानना ही बहुत ज़रूरी होता है कि उस वर्ड का स्पीच के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है या राइटिंग के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो देन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर speech and writing. When we see speech and writing, so you can see here thingy, vague word. It is a vague word used as a noun of people and things whose name one cannot remember, whose name we cannot remember. For example, give me that thingy there. Yes, that bottle opener. So उस bottle opener को उसने thingy कह दिया. So this is used in spoken. Mind you, discourse marker है used to bring attention to an important point. For example, he is a good actor. He is a good actor. तो mind you, he should be. Mind you से मुराद क्या है कि he wants, a person wants to get attention. तो उसने कहा mind you, he should be. He went to the best dream college. So mind you is used is also spoken. फिर एक और आपके पास phrase है now then. So now then is also used in spoken. Discourse marker may be used to get people's attention when something is about to happen. For example, now then, I want everyone to put their luggage together in one pile. So now then is used in spoken. इस तरह से कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कि राइटिंग में जिनका इस्तेमाल होता है. There are some which we use in writing. For example, subsequently. Now, subsequently is a conjunction
It is used in writing. For example, in speech, more likely to be later. In speech, more likely to be later. स्पीच में हम इस्तेमाल करते हैं later या afterwards. For example, the police found some important clues. Subsequently, 3 people were arrested. यानी कि पुलिस ने important clues find out किए और बाद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया. तो subsequently का इस्तेमाल हम राइटिंग में करते हैं. नॉर्मली स्पोकन में हम लेटर और आफ्टरवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. देन इन सम कंजंक्शन है, राइटिंग में इस्तेमाल होता है. इट मीन्स टू सम अप. For example, in some, we may say that most but not all English adverbs end in ly. So, in some is here to sum up or in short, like this. So, in speech and writing, there are some words, phrases which have their association. So, we should also know about their association as well. फिर कुछ words होते हैं which are old fashioned words or which are outdated words. They are no more in use, and if we use them, so it means that we are living in the past. Some words and expressions, they may be correct but may sound archaic, means outdated or old fashioned. For example, asylum. Asylum means hospital for the mentally ill people, or frock means dress. Wireless means radio. Consumption consumption means tuberculosis और टीबी, एक बीमारी का नाम है. आई ग्लासेस मीन्स सिंपल ग्लासेस. तो अब आई ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं होता. अब रेडियो का वायरलेस का इस्तेमाल नहीं होता. इसकी जगह हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से आप फ्रॉक का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं. असाइलम का इस्तेमाल नहीं होता, उसकी जगह हम हॉस्पिटल फॉर द मेंटली इल का इस्तेमाल करते हैं. वी डोंट यूज कंजम्पशन एनी मोर, बट नाउ वी यूज टीबी और ट्यूबरक्लोसिस. तो ये जो आपके पास वर्ड्स है, असाइलम, फ्रॉक, वायरलेस, कंजम्पशन एंड आई ग्लासेस, दीज आर द वर्ड्स which are which have become old fashioned or which have become outdated, and now we have new words for them. Then, so this is what we have about registered. और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, but mainly you should remember registered. Then register is concerned with the overall tone of a text. Text का overall tone क्या है, उससे इसका ताल्लुक है, और conversation, and the relationship that is built between the speaker and listener, or reader and writer. It is very important when we talk to, it differs from person to person who we are talking to. So we have to use our words, our sentences, our phrases according to the speaker, and of course, according to the listener. जो हमसे बात कर रहा है उसके मुताबिक हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये हमें रजिस्टर से पता चलता है क्या है. It is important to speak and write in the appropriate register for the situation. मैं आपको कुछ उसकी मिसालें भी देना चाहता हूँ. For example, let me share one slide here, one dictionary here. Now you can see here, I'm sharing a dictionary in front of you, and I've written here offspring. Offspring लिखा तो सामने offspring आपके पास आ गया, and you can see here offspring का जो रजिस्टर है वो क्या बता रहा है कि it is formal or humorous. Humorous उस वक्त होगा when you use it with those who you know, जिससे आप बहुत क्लोज है, अगर उसके साथ आप बात करते हुए offspring का इस्तेमाल करेंगे तो humorous हो जाएगा, फनी हो जाएगा. यानी कि अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इट विल लुक फनी एंड इट विल लुक ह्यूमरस. Otherwise, it is formal. A child of a particular person or couple, the problems parents have with their teenage offspring. So offspring is formal or humorous. इस तरह से आपको और भी बहुत सारी से वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपको डिक्शनरी बता रही होगी. फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है हमारे पास मिसाल के तौर पर बेबी. When we tap this word, so you can see over here it has many meanings. Meaning number one about simple baby child.
स्मॉल चाइल्ड. दूसरा जो है आपके पास द यंगेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली और ग्रुप. So when you want to take the second meaning, it means the youngest member of a family or group. So it means that you are using it informally. Informal user. He is the baby of the team. He is the baby of the team means you're talking about the youngest member of the team in an informal way. इसी तरह से और भी हमारे पास वर्ड्स हैं लाइक एक वर्ड है डिलीट. इसको देखते हैं. ये वर्ड है डिलीट हमारे पास. और ये आपको बता रहा है हमें ब्रिटिश इंग्लिश में इसका इस्तेमाल होता है डिलीट. और इसका आपके पास नहीं है. वो वर्ड जो मैं आपको दिखाना चाहता था शिट, उसका आप कॉलोकेशन उसका आप चेक कर लें. रजिस्टर्ड ये देखें सामने आ गया. शिट का इस्तेमाल टेबू भी है और स्लैंग भी है, दोनों है. तो इसीलिए इस वर्ड से हमें बचना चाहिए. इट इज़ एन एक्सक्लेमेशन. ये एक एक्सक्लेमेशन है जिसका इस्तेमाल बहुत आम होता है. इट्स वेरी कॉमनली यूज. सो इट इज़ अ स्वेयर वर्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ड है दैट मेनी पीपल फाइंड ऑफेंसिव. बहुत से लोग ऑफेंसिव इसको समझते हैं. तो दैट इज़ वाई वी मस्ट अवॉइड दिस वर्ड. तो ये देखिए डिक्शनरी आपको शो कर रहा है टेबू और स्लैंग. आगे उसने मेंशन कर दिया टेबू और स्लैंग. इसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर वर्ड डिफिकेट. ये एक वर्ड है डिफिकेट. नहीं शो कर रहा है. इसको ले लेते हैं हम डिमाइस. ये एक वर्ड है, इसको हम चेक कर लेते हैं. डिमाइस. ये देखिए ये लिखा हुआ गया ना सेकंड मीनिंग. सेकंड मीनिंग चेक कर लें. फॉर्मल और ह्यूमरस. मैंने आपसे कहा ना कि ह्यूमरस उस सेंस में व्हेन यू आर टॉकिंग व्हेन यू आर यूजिंग विद फॉर दोज विद होम यू आर वेरी इनफॉर्मल, जिनसे आपकी बहुत अच्छी गपशप है, उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो ये फिर हो जाएगा ह्यूमरस. अदरवाइज इट इज़ फॉर्मल. सो सडन डिमाइज, सैड डिमाइज, इमिनेंट डिमाइज, तो ये आपके पास फॉर्मल है. जबकि डेथ जो है वो न्यूट्रल वर्ड है और इनफॉर्मल भी है एंड न्यूट्रल. So there are many such words which are formal, informal, neutral, slang and taboo words. अब ये एक वर्ड है मिसाल के तौर पर सर ये तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको हम नेगेटिव उर्दू में लेते हैं. अदरवाइज इन इंग्लिश इट इज़ ऑल राइट. लेकिन इसकी जो फीमेल है वो जो है इट इज़ अ स्लैंग वर्ड. फर्स्ट मीनिंग तो animal, a female dog. But the second meaning is an offensive way of referring to a woman, especially an unpleasant one. You stupid little, and she can be a real bitch. So yes, क्या second meaning इसकी slang है or disapproving. It is a slang and disapproving. So this is actually how we can understand about many words. और हमें उनके register को check करना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि whether these words are slang, formal, informal, outdated, or whether they are taboo or slang words. If you know about them, so it will be easy for us to use our language in a proper manner. याद रखिएगा, if you don't know about register, then we may be in deep trouble. हमें नहीं पता कि कौन से लैंग्वेज, कौन से कल्चर में और कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि अगले को बुरा लगे और हमें उसके बारे में पता भी ना हो. तो ये आपको रजिस्टर ही बताएगा कि विच वर्ड इज सुटेबल और विच वर्ड इज नॉट सुटेबल in a particular context. So in short, I would like to say that register definitely is concerned with the overall tone of a text or conversation and the relationship which is built between the speaker and listener or reader and writer. So it is very important to speak and write or to communicate in the appropriate register for the situation. Otherwise, we may be misunderstood, or otherwise we may not be able to convince people. This is very important. It is a part of sociolinguistics. It is a part of sociolinguistics, which is the study of the way in which we use language in a social context. Remember, the way in which we use language in a social context. Social context में language को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए. This is something that we can learn, from sociolinguistics. और ये जो आपके पास register है, it is also a part of sociolinguistics. And definitely, if we know about it, then we will be able to use our language in a proper
manner. Thank you very much. अगर आप किसी को इस हवाले से कुछ सवाल पूछना हो तो काइंडली मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं. एंड आई ऑलवेज से दैट वन स्टूडेंट्स or anyone can learn more than 50% or at least 50%. One can gain 50% knowledge by asking questions.